Hello, assalamu alaikum and good morning. You are watching the Pavilion live on A Sports, 10 Sports and ARY Zap app. And we welcome you. What a fantastic start to the ICC Men's T20 World Cup we've had yesterday. Two amazing games, two really well contested games, and a surprise right at the start of the tournament where Namibia had a historical win against Sri Lanka. And then a really heated contest between UAE and Scotland. Netherlands, low scoring, but a really great game of cricket. Let's take a look at the groups, how they are all set up. We've had two games from Group A, and we've got the second group also on your screens right now. Group A, Namibia, Netherlands, Sri Lanka, United Arab Emirates, Sri Lanka under pressure there now. And in Group B, we've got Ireland, Scotland, West Indies, Zimbabwe, and we've got two games from Group B coming up today. Let's take a look at the two games, the two matches. Here are the match idents on your screens now. आज दो मैचेस हैं दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में हम पेश करेंगे बराह रास्त और होबार्ट से ये मैचेस आ रहे हैं. पहला मैच जो है वो स्कॉटलैंड बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ है, एंड उसके बाद दूसरा मैच जो है वो है आपकी स्क्रीन पर अब, और वो है जिम्बाब्वे बामुकाबला आयरलैंड. These are the two games that we are all set to bring to you live, and with that let me bring in my guests, panelists, friends, legends, icons and heroes of the game. With me in the studio, joining this edition of the Pavilion is none other than the young, the super fit and one of the fastest on his legs, Shoaib Malik. Shoaib, good morning and welcome. Good morning, Assalamu alaikum. With us is one of our very successful test captains, Mr. Dependable, a wall that stood when wickets were falling all around him and always stood his ground, Misbah-ul-Haq. Assalamu alaikum and good morning, Misbah. Wa alaikum assalam. Good morning to everyone. Finally joining us, just a day late, his boat has arrived, fresh off the boat, the toe-crushing, the incredible Waqar Younis. Assalamu alaikum and welcome back to the Pavilion, Waqar. Wa alaikum assalam. Good to be back again. Good to be in this beautiful studio. और दूसरा ये कि मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझे बड़ा मिस किया कल. बहुत, हमने आपको और आपकी चप्पू वाली कश्ती को बहुत ज़्यादा मिस किया. थोड़ा पानी आ गया था कश्ती में, वो क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड में. लेकिन ये है कि I'm here and I'm excited and I'm looking forward. Well, good to have you here. Thank you very much. And finally, the king himself, the Sultan of Swing, the legend of all legends, Mr. Wasim Akram. Good morning, Wes. Good morning. Assalamu alaikum, everyone. You are a morning person. We all know that. Am. आपके Instagram की posts हम देखते हैं, उसमें आप सुबह जो हैं वो दौड़े लगा रहे होते हैं, कभी लॉन्ग वॉक्स के ऊपर जा रहे होते हैं और हम सबको ताने मार रहे होते हैं कि सुबह उठा करो बेसिकली, और ये नाश्ते में जो है वो टमाटर और नहीं गाल मानने में. They say what they Not say. you, me no, in but general. Generally, you know what they say. Legends either wake up at 5 a.m. or go to sleep at 5 a.m. So you are the latter one. We're both legends in our own way. Let's just leave it at that. We will leave it at that. All right. Let's start off with yesterday's games. Now, Waqar, you were on the flight, and but do you know what really went down? What happened here? Yeah, Yes. I've got a fair idea. देखा नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा और सुना और it's a real surprise, and of course वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है. I mean, इस तरह का स्टार्ट जो होता है सारी टीमों को एकदम टोज पे कर देता है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द गेम. अब आज वेस्ट इंडीज़ भी थोड़ी घबराई ज़रूर होगी क्योंकि उनका भी मैच को आसान नहीं होगा. सो अर्ली सीजन ऑल्सो देयर, और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बारिशें आजकल बहुत हुई हैं तो पिचें शायद उस तरह की ना, उस तरह की फ्लैट पिचें ना हो, तो यू माइट सी सम अपसेट्स. यू ऑलरेडी सीन वन. So my question is, Vicky, you live in Australia, you played so much cricket there. These drop-in pitches, ये weather से उसको भी affect होता होगा? Of course, वसीम भाई, विकेट्स जो होते हैं वो बेसिकली जो भी प्रेपरेशन होती है बाहर होती है, लेकिन उसको ये नहीं है कि जो रात को आके लांदे ने पिच. They just do it like a few months back. They prepare it, they make sure that तो वो उसको उसमें लगाते हैं, and then they prepare it with the actual soil of the ground. So ये अगर बारिशें होंगी तो मॉइस्चर ऑफ कोर्स उसमें जाएगा. कल दूसरे मैच में आपको नजर आया ड्रॉप इन पिच में वैसे जो है ना मॉइस्चर होता है. अच्छा, हाँ जी, उसमें कंडीशनिंग कर रहे होता है, और अगर बॉल का इम्पैक्ट जब पिच पे पड़ता है तो उसकी आवाज़ भी डिफरेंट होती है. वो ऐसे लगता है भप की आवाज़ आ रही है उस पर, और थोड़ा सा स्पंजी टाइप बाउंस होता है. फील हॉलो जैसे कोई नीचे है अर्ली ऑन, वो उस पर थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है आपको. बाय द टाइम वो सीजन चलता है तो फिर वो लगता है कि जैसे नेचुरल आप पिच पे खेल. Namibia surprised Sri Lanka.
coming off the back of the Asia Cup success, were taken aback. 55 रन की defeat दी है कल नामीबिया ने. Now historical day for Namibia. इस स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं. Namibia batting first, 163 for 7. Freiling, they're playing that spectacular innings, but it was also J.J. Smith who also did that 193 strike rate के साथ, 193% strike rate के साथ बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली. And Sri Lanka, well, their batsmen found themselves in a very strange zone, I would say. I think they let go when Namibia was 95 for 6 or 95 for 5. तो तब आके फिर obviously जो going for the kill होता है और उनके fast bowlers looked out of match practice. And I think both the batters who got runs in the end, they took advantage of their fast bowlers. Spinners बहुत brilliant. Spinners को बड़ा अच्छा खेलने हैं वो नामीबिया वाले. कोई उन्होंने slog नहीं किया. जो मेन बॉलर था हसरंगा, उसको उन्होंने आराम से खेला है, फिर उसने छोड़ी है, उसको छक्का भी मारा है. So they had a plan, and 163 के बाद, if you remember, Misbah said कि with Namibia की जो bowling है, medium paces, back of a length, इस पिच पे जिस पे ड्रॉप इन पिच, थोड़ा घास, ओवरकास्ट कंडीशन, वो तंग करेंगे, और वही हुआ. जी हाँ, बल्कि मिसबा वेरी गुड कॉल. यू सेड 140 पे भी ये तंग करेंगे और 55 रन्स की डिफीट दी है इन्होंने. असल में बात यह है कि जब आप कंडीशंस जो है वो डिक्टेट करती हैं. अगर आप एशिया में खेल रहे हैं तो यूर स्पिनर्स आर बेसिकली यूर अटैकिंग ऑप्शंस. वो आपको विकेटें लेके देते हैं, कंडीशन सजेस्ट करती हैं. जो फास्ट बॉलर हैं वो थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कि डिफेंसिव बॉलर्स होते हैं, अर्ली ऑन वो बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में बचाने की कोशिश करते हैं. मोस्टली जो प्रेशर सिचुएशंस हैं या विकेट्स लेने का काम स्पिनर्स का होता है. ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है. वहाँ पे अगर बैट्समैन गलती नहीं कर रहा और एक्चुअली नॉट गोइंग आफ्टर द स्पिनर, तो वो विकेट्स उस तरह ले नहीं सकते. कल उन्होंने कोशिश की है हसरंगा ने, लेकिन उसको विकेट्स नहीं मिली. वो आराम से खेलते रहे. उसको फास्ट बॉलर्स का काम था, जैसी कंडीशन और पिच थी, कि वो वहाँ पे ब्रेक थ्रूज देते, अच्छी बॉलिंग करते. लेकिन उन्होंने हाथ में आई हुई सिचुएशन को भी बिल्कुल रूम करके रख दिया. आप देखेंगे 30 प्लस, 36, 35 मेन बॉलर्स अगर रन्स दे रहे हैं, जहाँ पे कि उनके मीडियम पेसर्स 4 ओवरों में 18, 19, 20 से ज़्यादा किसी ने रन्स नहीं दिए. तो आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस. टिपिकल सबकॉन्टिनेंट टीम गोइंग ओवरसीज. अर्ली सीजन जाते हैं जब, तो आइडिया नहीं होता, और फिर ऑफ कोर्स जब आप लो रैंक टीम के साथ खेलते हैं तो कई दफ़ा आप ना थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं. जब सिंपल करें 5 आउट उन्होंने कर लिए थे, एंड देन व्हाई यू ऑफ गार्ड क्यों कर ली चीज़ें? अगर वहीं पे प्रेस ऑन करते तो वो नहीं थी. क्वेश्चन पूछता हूँ, बीइंग अ प्रेजेंट क्रिकेटर, अब जैसे पिच जो थी कल की, अब उन्होंने 5 से 6 आउट कर लिए नामीबिया के. अब जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब अगर आप उस स्टेज पे एज अ बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो, से नंबर 5 विकेटें गिरी हुई हैं, यू आर बैटिंग विद नंबर 7, तो फास्ट बॉलर्स अब साइकोलॉजिकली आखिरी 4 ओवर में कोशिश करेंगे मैं यॉर्कर करूं, तो यॉर्कर में फुल टॉस भी हो जाएगी, वॉली भी मिल जाएगी. तो ऐसी पिच पे बैक ऑफ अ लेंथ रिस्क लेना चाहिए बॉलर्स को, जहाँ पे बॉल थोड़ा मूव कर रहा है, इवन लास्ट 4-5 ओवर्स. देखिए वसीम भाई, उसमें अगर आपने ऑलरेडी विकेट्स ले लिए हैं, गो फॉर द किल, टेक ऑल द विकेट्स. ओके, तो उसमें ये है कि आपने बहुत बेसिक रहना है. आपने गुड लेंथ का एरिया जो है वहाँ पे बॉलर के पास भी चांस है विकेट लेने का. आपको प्लेस करना है बॉल को, या जहाँ आपके फील्डर्स ऑलरेडी हैं जो अपने एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे मिड विकेट है या स्क्वायर लेग है, तो खिंचे हुए बॉल को ओवर मिड ऑफ मारना उन कंडीशंस में वैसे ही टफ हो जाता है. तो उसमें यह है कि आपने जो नर्व होल्ड कर जाए उस टाइम पे, बैट्समैन वुड प्रेफर कि तुझे यॉर्कर करें वो आखिरी 4 जाहिर बात है यॉर्कर पे या रन्स हैं या आउट है, मोस्टली रन्स होने के ज्यादा चांसेस हैं, अनलेस इफ इट्स रिवर्सिंग. एक चीज़ और भी गलत थोड़ा सा कर सकते थे बेहतर. शनाका जो है वो मीडियम पेसर है, उसने एक ओवर भी नहीं किया. और कल वाली पिच तो मुझे लगता है कि मीडियम पेसर के लिए आइडियल थी. कि आप उस लेंथ को, आप तीनों फास्ट बॉलर मार खा रहे हैं, तो आप कोई एक ओवर तो करते कहीं पे आके. शनाका स्पिनर से भी स्लो आता है उसका बॉल. शनाका की पेस होगी 112, 115. लेकिन कल तो मेरे ख्याल में का काम नहीं था. वो हम जीलोंग में थे, आज हम होबार्ट में हैं. Different ground, different stats of the ground. Yeah. And let's find out how the pitch is. We've got Samuel Badri and Ian Bishop with the pitch report.
So happy to be here at Bellevue Oval for the start of Group B action of this Men's T20 World Cup 2022. And just to inform you that right now it's a little bit cold, even though the sun is out in all its glory. The wind is coming strongly from the river end up towards the northern side of this ground, so captains will take that into consideration. Also, from the dimensions point of view, if you're bowling from that river end again towards the grass banks, it's 60 meters. That's the shorter of the two square boundaries because the opposite side is 66 meters. And if you're hitting straight down the ground, it's a nice muscular blow, 81 meters. But that's my thought on climatic conditions and also the surround. Samuel Badri is here with me to talk about this important strip for today's game. Yeah, quite different conditions to what we're used to, both in terms of the temperature quite cool, but as well as the strip itself. It's very well grassed, live grass, green grass, young grass. I think it's just 6 weeks old is what I'm told from the groundsman. So a little bit of uncertainty as to the way it will respond. But beneath this layering of grass, it's quite firm and compact. It means, therefore, that the ball will come nicely onto the bat and the bounce will be quite true, which is a good combination if you're a batsman. The highest scoring venue in Australia, the first inning score, average first inning score, 176 since the start of 2020. The bat will dominate the ball. The bowlers, they'll have to find a way to restrict run scoring. Not much turn for the spinners, but I think it's going to be a high-scoring contest. There you have the pitch report. Waqar, what do you think about that pitch? घास तो नजर आ रहा था, मगर उन्होंने कहा तो हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट होगा. I mean, I guess वो स्टैट्स देख के उन्होंने बोला. अब पिच को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि घास और यंग घास और ग्रीन घास और इतना सारा घास और ये सारी चीज़ें हैं, तो that means it's not going to be that easy. I mean, पेसर will have their say अगर इसको देखा जाए पिच को, क्योंकि ball will seam around with the cooler weather. It's not very warm there, so I feel के you know, it might not be 176. You know, West Indies playing, you can expect anything, but might not be that many runs. Conditions. Yeah, might not be that many runs, yeah. मिसबा, क्योंकि आपको घास पे इतना अबूर है बकौल वसीम अकरम के, तो ये यंग घास का क्या मतलब होता है? नौजवान घास है, इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये है कि सिर्फ आपके लीव्स हैं, वो उतना ज़्यादा, उसकी रूट्स उतनी ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं. बॉल जब लगता है तो वो ज़्यादा सीम करता है. यहाँ पे पिच नॉर्मली स्लो होती है. हल्का सा ग्रास कवर जो है वो अगर नीचे से हार्ड है, पिच कॉम्पैक्ट है, तो वो जो हल्का सा लीव्स हैं ऊपर ग्रास, वो बेहतर आता है, बॉल स्किट करता है, उसका बाउंस और पेस भी अच्छी होती है, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा बॉल हिले. मेरे ख्याल में इस वजह से, वरना बहुत स्लो पिच होती है. जो मैं यहाँ पे टेस्ट मैच खेला हूँ, वहाँ पे शॉट्स खेलना मुश्किल होती है. हाई स्कोरिंग गेम्स हो भी इसीलिए रही हैं प्रीवियसली के थोड़ा सा बेहतर पिच को बैटिंग करने के लिए ऊपर ग्रास कवर. होबार्ट के स्टैट्स देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं. दिस इज़ दी होबार्ट स्टेडियम स्टैट्स, जो अभी तक इस ग्राउंड के बारे में हमें इल्म है फॉर द वर्ल्ड कप, एंड दिस इज़ ऑन योर स्क्रीन नाउ. सो बाउंड्रीज जो हैं, जो टोटल रन स्कोर होते हैं, उसमें से 55.8% जो है आपकी बाउंड्रीज हैं. लुक एट दैट अगेन. फिंगर स्पिनर इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल हियर, एंड द विनिंग percentage chasing is only 23%. Yeah, that the stat shows that chasing is difficult on that pitch, and I suppose mostly ये day night matches होते होंगे. So evening में हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में in general flat deck भी हो, बॉल नया बॉल थोड़ा बहुत हिलता ज़रूर है वहाँ से, बिकॉज थोड़ा कूलर वेदर आ जाता है, लाइट्स का इफेक्ट आ जाता है, पिच थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है. सो मे बी दैट्स वाई द चेजिंग इज कम परसेंटेज है उसकी. सो दिस वर्ल्ड कप इज टोटली डिफरेंट. इट वोंट बी जो सब कॉन्टिनेंट में हुए थे कि टॉस जीतो, बॉलिंग करो, 80% मैच जीतो, ड्यू पड़ जाएगी. यहाँ पे आई मीन आपको पूरी प्लानिंग ऑपोजिट करनी होगी कि बैटिंग पहले भी कर सकते हैं यहाँ पे. You have to be ready for everything, and you have to be ready for a break. See you on the other side of this break. Keep watching the Pavilion.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। इट्स द ICC Men's T20 वर्ल्ड कप एंड वी आर ऑन डे 2। ग्रुप बी के 2 मैचेस आपकी खिदमत में लेकर आने हैं। विद मी इन द स्टूडियो आई हैव गॉट द लेजेंड्स, आई गॉट द हीरोज, आई गॉट द आइकॉन्स, शोएब मलिक, मिसबाह-उल-हक, वकार यूनिस एंड वसीम अकरम। पहला मैच आज वेस्ट इंडीज का मुकाबला स्कॉटलैंड है, बट हम होबार्ट की बात कर रहे थे एंड होबार्ट टर्न्स आउट टू बी your home ground, Shoaib, if I'm not mistaken. Yes, I've played for the same team for about 2 years. तो अभी जो पिच हम लोगों ने देखा है डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मली घास नहीं होता इस वेन्यू पे, लेकिन अर्ली डेज हैं तो इस वजह से जो है उन्होंने ग्रास छोड़ा है। और डोंट फॉरगेट जो दोनों एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने पिच रिपोर्ट दी वो दोनों वेस्ट इंडीज़ के हैं और वेस्ट इंडीज़ में भी मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ। तो वो इस तरह बात करते हैं, अगर लास्ट 5 ओवर्स में भी 80 रन्स चाहिए हो तो वो ऐसा वो बोलते हैं इतने छिक्के चाहिए। अच्छा। तो इसीलिए जो है उन्होंने बोला कि हाई स्कोरिंग जो है एंड यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस कैरेबियन गाइज। अगर उनका मूड हो तो फिर वो जैसा मर्जी पिच हो। But they're exciting to watch, जैसे भी हैं वो। It's an exciting team to watch. वो कई दफ़ा अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अब जैसे उनका एक मेन प्लेयर जो one of my favorite players in this format, Hetmeyer, he got dropped because भाईजान ने फ्लाइट मिस कर दी थी, सुत्ते रह गए सन, and he got dropped from the squad. लेकिन मैं सुता नहीं रहा, लेकिन I promise you, मैंने जो भी क्राइस्टचर्च से जो फ्लाइट मिस की है हुआ था ना कुछ, आपकी कश्ती डूब जानी थी। मुझे शक था कि फ्लाइट मिस हुई। नहीं, अगली वाली फ्लाइट जो थी ना ये डिले हुई है और अगला फिर कनेक्शन मिस हुआ है। अच्छा, हिटमायर जो है ना, मैंने हमें फिर भी आपको ड्रॉप नहीं करना था। मैंने ना कैप्टनसी की है गयाना टीम की फॉर अबाउट 2 इयर्स। तो मेरी टीम में था। अच्छा, एक सेकंड, ये वेस्ट इंडीज का स्क्वाड देख लेते हैं बिकॉज टाइम की भी हमें थोड़ी सी कमी है। प्रोड्यूसर मेरे कान में जो है मुझे बार बार कह रहे हैं कि वक्त की शदीद कमी है। तो शोएब, जो आप बात कर रहे हैं ये टीम के ये स्क्वाड के साथ, बिकॉज आप वेस्ट इंडीज हुए, टेक अस थ्रू द टीम एंड देन टॉक अबाउट द प्लेयर्स एज यू वर सेइंग। निकोलस पूरन जो है वो वेस्ट इंडीज का कैप्टन है, साथ में कीपिंग भी करता है, लेकिन वो कीपिंग जो है उससे चार्ल्स से करवा रहे हैं क्योंकि उसने रिसेंटली CPL में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली किया है। मोस्टली ये रिलाई करते हैं ऑलराउंडर्स पे, जैसे ओडियन स्मिथ है या वो होल्डर है, ये ऑलराउंडर हैं। इवन अकील हुसैन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये सब साथ में बैटिंग करते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं कि ये आपके साथ ऐसा मैच खेलते हैं हाई स्कोरिंग वाला कि अगर आप हमें मारोगे तो हम आपको उससे ज़्यादा मारेंगे। तो इस वजह से ये मोस्टली रिलाई करते हैं ऑलराउंडर्स पे और इनका कॉम्बिनेशन भी जो है वो अराउंड ऑलराउंडर्स ही होता है, ताकि ये है कि ऑलराउंडर्स ही बॉलिंग भी करें और ऑलराउंडर्स ही जो है वो बैटिंग भी करें और हाई स्कोरिंग जो है वो मैच। हिटमायर की बात बता रहे थे कि आपकी टीम में था। हिटमायर जो था उसको ये इश्यूज हैं, वो ये करता है कि अगर $100 फाइन है तो वो उसकी पॉकेट में $100 पड़े होते हैं। अच्छा। और वो लेट अक्सर होता है, वो प्रैक्टिस सेशन से भी लेट होता है और वो थोड़ा काइंड ऑफ लेट बैक है। तो इससे पहले कि मैनेजर कुछ बोले वो पहले ही $100 ना हाथ में उसने पकड़े होते हैं। उसका भी इलाज है ना, अब $100 नहीं है, फिर बाहर कर दिया नहीं, $5000 रखो ना। फाइन फिर ऐसे बंदे को ऐसे ट्रीट करना पड़ता है। इज अ टैलेंट, और जब टैलेंट वेस्ट होते देखते हो ना आप, एटीट्यूड, दैट्स मोस्ट पेनफुल टू मी। बट व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस, शोएब? आई गेस उसमें मैंने जो कल्चर देखा है, जैसे हमारा सब कॉन्टिनेंट का हमारा ग्राफ जो है वो बड़ा फ्लक्चुएट होता है, तो उनमें भी ये है कि उनको फिक्र नहीं है कि यार मैं जो है ना कि कल मैं क्या करूँगा, परसों मैं क्या करूँगा ना। वी सेट गोल्स फॉर आवरसेल्व्स, तो फिर हम उनको अचीव करने के लिए जो हार्ड वर्क हो, जो रिलेटेड जो चीज़ें करने वाली, वहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे जो है ना, वो शिफ्ट भी हो गया मेरे ख्याल में, वो वेस्ट इंडीज़ में नहीं रहता शायद, वो वहीं रहता है। वो भी, उसका भी किस्सा हमारे वाला ही है, उसकी शादी हुई है और वो हमसे भी ज़्यादा डरता है। तो अपनी हमसे भी ज़्यादा डरता है, इसने सबको रगड़ दिया इस पैनल के ऊपर, हमसे भी ज़्यादा डरता है। ये क्या बात है यार? कहते वैसे ठीक रहे, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। Talk about yourself, you three. ये सुने, ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ शेर जो है ना ये धाड़े मार रहे हैं। सुने, ये सुबह जल्दी उठना, जल्दी सो जाना, वो किस लिए? तो मेरी जान छुट्टी दे। नहीं, अगर मैं जल्दी ना सोऊं, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज ना करूं तो मेरा मुंह भी बड़े दुआने च डनाउणा सी। जी, अकील हुसैन का इंटरव्यू है हमारे पास दोस्तों इस वक्त। लेट्स लिसन इन व्हाट अकील हुसैन हैज टू से।
It's been an integral part of every T20 lineup, certainly the best ones. And Akil Hussain here with me. Akil, how are you adapting to Australian conditions so far? It's my second time in Australia. I've been here with the 2012 with the West Indies under 19s. Yes, it's different conditions. It's a bit cold, but having said that, I think the preparation has been great so far. From a team point of view, the West Indies now have to go through this first round to get into the Super 12s. What's the feeling in the camp about it? I think the feeling in the camp is good. Yes, we have to go through. We have to take the longer route. But having said that, it's a challenge. It's a challenge that we look forward to. And I think it's motivation as well for us to know that we have to go out there and take no one for granted to get that trophy. Coming up against Scotland, who got into that Super 12s in that last World Cup, and you were also there. What's the preparation been like in a focus to the first time meeting in T20 eyes? Yeah, it's always challenging when you come up against an opposition that you haven't played against. So definitely, for me, it's about, as I do for every game, I go back, I do my homework, I do my research. But having said that, you have to be open-minded when you come up against teams like this. And it's basically, you learn as you play against these oppositions. So I've done all my homework and just going out there hoping for the best. A lot of people are focused on the batting of this West Indies team, not exclusively, but a lot of people are focused there. What do you think the guys, including yourself, all-rounder, have learned so far in the two T20Is and the warm-up games? I thought we played really good cricket. To come to Australia, not a lot of guys played in Australia before, and to play against the defending champs and give them a good run, we were all pretty happy with that. I thought we adjusted really well because we had short space of time coming over here as well. So I think the guys they did pretty well. The training and stuff in the nets as well have been good. So it's just about transferring what you did in practice into the matches. May you transfer that well. Thank you very much for your time. Thank you. All right, that was Akil Hussain from the West Indies. Let's take a look at the Scotland squad. Aapki screen ke upar ye aa raha hai Scotland ka squad sare ka sara. And Waqar, why don't you take us through this? देखिए अब ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई इतना अच्छा नहीं है. अभी रिसेंटली अगर देखे जाए इनके पिछले 5 मैच तो 5 मैच हारे हुए हैं. लेकिन ये है कि टैलेंटेड है टीम ऑफ कोर्स, और हम किसी तरीके से भी लाइटली इनको नहीं लिया जा सकता. रिची बैरिंगटन अप एट द टॉप इज़ अ कैप्टन. Of course, Matthew Cross, vice captain. So they have got, I mean, there are players, don't think that Brendan, what is that, McMullen is the same McMullen which you mentioned. Mitchell Leask, I think he is a very, very fine player. Chris Grievous, he's a very good cricketer. So they, I mean, don't know much about them, but over the years they have improved a lot. और पिछले मैच को देखने के बाद श्रीलंका को जो एशिया कप की चैंपियन टीम थी उनको जो लटकाया गया है, उसके बाद वेस्ट इंडीज कहीं भी इनको लाइटली नहीं लेंगे. And their captain Barrington is good job, नहीं? I think Waqar did a good job. He should, because we surprised him. Not bad. We did not tell him that Scotland is going to come his way. Misbah को break में तैयार किया हुआ था. Their captain Barrington, I think, is in good nick. Last 10 innings, he scored about 200 runs, average of 130. Yeah. So it's not a team you can take it easy, especially on pitch like this. It's a very Scotland type of pitch. Bit of grass, bit of moisture, spongy. Yeah. We've got their vice captain with us right now, Matthew Cross. Let's listen in. His son playing hide and seek here at Bellerive Oval, but occasionally we get that bright sunshine, and great to have Matthew Cross here with me. Matthew, you celebrated your 30th birthday a couple of days ago. What was that like? I've been pretty lucky. I've spent a lot of my time on tours with the boys. I was lucky enough to have my girlfriend here as well, so that was quite nice. But what a good time to have a nice birthday present of a World Cup. This responsibility of vice captaincy, how is it going? Really enjoying it. It comes with challenges, of course, but it's been good fun so far, and I'm really enjoying it. Coming out of that last World Cup in 2021, you've only, as a team, played 2 T20 internationals. How do you adapt and cope with this one coming around so quickly? Yeah, I think we'd like to have played more T20I cricket, but we've also had a lot of ODI cricket in the World Cricket League too. So guys have come off the back of a domestic summer, so we've been playing a lot of cricket still. So it's just some minor adjustments, and hopefully that'll be the key to getting it right today. Yeah, and a new leadership setup. You've got Richie now leading instead of Carl for a full-time perspective. How is he going, and how are the team responding? I think he's relishing the challenge. He's a natural leader anyway, and obviously he's been part of this team for such a long time. Guys definitely look up to him, and I think he'll flourish in the role. First T20 international against the West Indies. What do you know? What insight could you give us? They're obviously a different team to what they've been of previous years. Some of the guys missing, but they're all extremely experienced cricketers, and in their own right have gone to different domestic leagues and done really well. So there is some knowledge on them, but I think we've
got to give them no massive respect today and try and play our game of cricket. Coming into this World Cup, that last one, you averaged around 20. What did you learn then to apply now? I think the conditions were obviously massively different, and I think the games came thick and fast in terms of playing against guys we've never played against before. So there was learning in terms of where the bar is now, and we're stepping up to that bar, hopefully. Thank you very much for your time. Thank you. All right, that was Matthew Cross, the vice captain, and with that, we are now getting ready to take you live to Hobart, where Ian Bishop is walking to the center of the pitch and waiting for the captains to arrive as the toss comes in. What do you think, Waqar? Win the toss and do what? डिपेंड करता है कौन टॉस जीतता है. अगर वेस्ट इंडीज टॉस जीतती है, आई थिंक दे विल लाइक टू चेज, जैसे अभी मलिक ने थोड़ी देर पहले कहा ना, चक्कों पे बिलीव करते हैं. सो दे वोंट माइंड एनी सॉर्ट ऑफ टोटल ऑन द बोर्ड, और दे विल बैक देमसेल्फ टू चेज दैट डाउन. सो आई हैव अ फीलिंग अगर वेस्ट इंडीज़ करेगी तो ये करेगी, और ऑपोजिट अगर देखा जाए वो जस्ट गॉट टू वेट. आई थिंक बेटर है कि वेट कर लें, फिर देखते हैं, फिर उस पर बात कर लें. और इस पिच पे जो अभी स्टैट्स हमें बताए गए हैं कि 17 गेम में से 14 गेम में वो टीम जीती है जिन्होंने बैटिंग पहले की है. सो चेजिंग स्लो हो जाता है ना उसमें, लेकिन इस पिच पे ग्रास है और फ्रेश पिच है, और इस पे मुझे यही लगता है कि एटलीस्ट आपके पास आइडिया होगा. We are going to now cross over to Hobart, where Ian Bishop is getting ready with the two captains for a toss brought to you by Dettol. We are ready for Group B action, the opening encounter on this side. And Richie Berrington, the captain of Scotland, Nicholas Pooran, the captain of the West Indies, and of course Chris Broad is the father of Stuart. Nicholas has got the coin. Heads. Heads is the call, it is a tail. West Indies at work. So Nicholas Pooran has won the toss. Nicholas, tell me what you're going to do and why. We're going to have a bowl first, just the conditions, obviously a new pitch as well. So we're just going to see if we can get early wickets with a new ball and try to shut this game down early. Having to now qualify, in a sense, out of round one to try to get into the Super 12s for the first time, how's the team feeling about this? We're motivated. We know we're starting from the bottom. We have to do the harder work to get into obviously the qualifying stage of the World Cup. But we are motivated, and obviously we know we have to work really hard. Not taking anyone for granted. We just want to focus on ourselves, try to play better cricket each and every game. Who have you left out from your squad of 15, which is the easier question? Definitely easier. Cottrell, Reefer, Johnson Charles and Yannick Carrier is out today. All right, all the best to you, Nicholas. Thank you. Richie, walk this way. Good luck. What do you make of Nicholas's decision? How do you feel? Yeah, I think we would have been tempted to have a bowl first as well. I think with some of the moisture around, but the conditions look really good. And I think on this ground it's going to be fast scoring, so hopefully we can get off to a good start and put them under a bit of pressure. If I might just angle you a little bit more this way, thank you very much. Just a couple of T20 internationals since the last World Cup. How are you set about that going into this one? Yeah, obviously, look, we've got a lot of good memories from the last World Cup 12 months ago. Certainly took a lot of learnings from after we qualified into that second stage, and as a team we've really looked to work hard and make some improvements, which we have done over the last year. And our 50 over cricket's gone really well this year, which has been good, so I think we can take a lot of confidence from that coming into this tournament. Who have you left out of your squad of 15? Chris Soule, Hamza Tahir, Craig Wallace and Brandon McMullen will miss out. All the best to you. Thank you. Right, just a reminder of what is going on, even though it's a little bit chilly out here. The West Indies have won the toss. They'll be fielding first. और खबर आपके सामने होबार्ट से, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. गुड डिसीजन दैट मिसबा. आई थिंक नॉर्मल, जैसे मालिक ने कहा कि नॉर्मली जो विकेट है वो ब्राउन होती है, ग्रास इतना नहीं होता. पहला मैच है, कप्तान ने उनके यही बोला कि थोड़ी बहुत मॉइस्चर भी नज़र आ रहा है पिच पे, तो आई थिंक कोई भी टीम चांस नहीं लेगी ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के एक ही चांस होता है आपके पास जब आप ऐसी टीम के साथ खेल रहे होते हैं जैसे स्कॉटलैंड है, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बैटिंग में हो जाए कि उनको आप कहीं स्निफ दे दें मैच की. आई थिंक दैट्स वाई दे वांट टू बॉल फर्स्ट. राइट डिसीजन. उनकी बैटिंग पावर भी ऐसी है, जितना भी स्कोर होगा दे विल बैक देम. अव्वल तो कोशिश करेंगे जल्दी आउट करने की, बट अगर हो भी जाता है तो दे विल ऑलवेज बैक देयरसेल्व्स टू चेज इट डाउन. नो, एन इंटरेस्टिंग थिंग इज हैपेंड हियर. आपका होम ग्राउंड रहा है. होम ग्राउंड का स्टैट कहता है कि जो भी साइड, जो वसीम ने भी पहले पॉइंट आउट किया कि चेज करती है, उनके जीतने के सिर्फ 23% चांसेस होते हैं. एंड वकार सेड दैट दे डोंट केयर. दे बोथ ऑफ यू सेड दैट दे कैलकुलेट द सिक्सेस. हम कुछ भी स्कोर कर सकते हैं.
So this should be a test for everybody because nobody knows what this pitch is going to do now. इसीलिए वेस्ट इंडीज़ जो है ना, वो तो अगर घास नहीं भी होता पिच पे तो वो पहले बॉलिंग ही करते, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है कि आप हमें जितने भी रन्स करेंगे हम उसको टारगेट को पूरा करेंगे। तो वो तो अपनी ट्रेडिशनल जो उनकी सोच है वो उसी पे गए हैं। लेकिन ये है कि ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये फॉर्मेट है T20 जिसमें आपका इंटेंट वो तभी आता है जब आप ये नहीं सोचते कि पिच कैसा खेलेगा या क्या करेगा जाके। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आपको उस पे रहना चाहिए। ठीक है, फ्रेश पिच है, हर चीज़ है, लेकिन आपका इंटेंट रहेगा तो ही आप एक ऐसे टारगेट पे पहुंच पाएंगे जहां पे जो दूसरी टीम के लिए अचीव करना मुश्किल हो। All right, folks, so news out of Hobart. West Indies have won the toss, elected to field first. और इसके साथ ही हम लेते हैं Pavilion पे एक छोटा सा वक्फा. We will see you on the other side of the break. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion, and with me in the Pavilion, the legends, the icons, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. पहला मैच वेस्ट इंडीज़ बामुकाबला स्कॉटलैंड। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर होबर्ट में जो है पहले फील्डिंग का वो किया है फैसला। ज़रा नज़र डालते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 जो है ये आपके सामने आ रही है। मिसबा, टेक अस थ्रू। जी, स्पेशली मंजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि जो स्ट्राइक रेट है ये वाहिद प्लेयर हैं जिनका 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है, और अर्ली ऑन डिपेंड करते हैं कि पावर प्ले को ये यूटिलाइज़ करें। जॉन्स ये एक ही मैच खेले हैं। क्रॉस ऑब्वियसली ये इनके जो टॉप के 3-4 बैट्समैन हैं इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बैरिंगटन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एवरेज है, सबसे ज़्यादा रन्स भी हैं, कप्तान भी हैं। मैकलॉयड ही इज़ ऑल्सो गुड प्लेयर। तो मेनली ये जो टॉप के बैट्समैन हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वॉट बहुत ही ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर, और ये स्पिन बॉलिंग करते हैं और एंड के ओवर्स करते हैं। यॉर्कर्स बड़े ज़बरदस्त करते हैं। इकॉनमी बहुत बेहतर इकॉनमी है इनकी इनमें सब में से। जी हाँ, और हमने देखा है कि होबार्ट में अगेन फिंगर स्पिनर्स की जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत अच्छा है। वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 पे नज़र डालते हैं। एंड शोएब, सिंस यू प्लेड विद देम, टेक अस थ्रू। ये मायर्स हैं, ये ओपन करते हैं, साथ में ये बॉलिंग भी करते हैं। देखा नहीं हो आपने मायर्स को? अच्छा नहीं, ये T20 में अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेला है इन कंडीशंस में, और इन कंडीशंस में जो है ये बहुत डेंजरस होगा। इवन इसकी जो मीडियम पेस है वो जैसे स्मिथ हैं, हुसैन, ज़ारी जोसेफ, इनमें जो सिर्फ बैट्समैन है वो एवन लुइस 51 नंबर और ब्रेंडन किंग 31, ये सिर्फ बैट्समैन है। उसके अलावा ये सब बॉलिंग करते हैं। ब्रुक्स भी बॉलिंग करता है। जी, ब्रुक्स भी बॉलिंग करता है। जो पूरन है वो विकेट कीपर है, ऑफ कोर्स द कैप्टन। बाकी मैकॉय, जोसेफ और ये जो ओडियन स्मिथ है और होल्डर, ये इनके मीडियम पेसर्स हैं और ये साथ में बैटिंग करते हैं। सारे एज आई सेड के सारे ऑलराउंडर्स हैं। और इनकी एक चीज़ जो है ना वो बहुत डेंजरस है, इनके आगे कोई टीम लग जाए फिर ये ऊपर से लेके नीचे तक उसको फड़काते हैं। Because they don't believe in taking a single, like you said, they believe in boundaries. They believe in boundaries और regardless 85 मीटर्स की है या 65 मीटर्स की है, वो बस। और आखिरी 5 ओवर में 80 भी चाहिए होंगे तो वो ये सोचेंगे कि हाँ इतने छिक्के चाहिए। और फास्ट बॉलिंग बैटरी अगर आप देखें उनकी, ज़ारी जोसेफ का अभी करंटली जो रिकॉर्ड है वो 150 पे रेगुलर बेसिस पे बॉल करता है, और उसकी जो विकेट्स हैं स्पेशली जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा है। ओडियन स्मिथ वो भी इसी तरह है, तेज़ भी है, बैटिंग वो प्रॉपर बैटिंग आगे नीचे जो हिटिंग करता है। इवन पाकिस्तान जब आए थे तो वहाँ पे भी उसकी परफॉर्मेंसेस थी। फिर जो चेंज है मैकॉय जो है वो उसके जो स्लो वंस हैं, यानी डिफरेंट उनके पास वेरिएशन है, लेफ्ट हैंडेड वेरिएशंस हैं फास्ट बॉलिंग में। अगर थोड़ा सा बॉल हिलता है तो होल्डर वो नया बॉल जिस तरीके से करता है, सीम आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करता है। मायर्स है वो नया बॉल करता है और बहुत अच्छा स्विंग होता है उसका गेम। तो आई थिंक ये कंडीशंस अगर इस किस्म की मिलेंगी तो वेस्ट इंडीज बॉलिंग में आई थिंक दे विल बी हैप्पी। निकोलस पोरन ने एक और भी खिला सकते थे शेल्डन कॉटरेल को। उसका अर्ली ऑन बॉल स्विंग होता है और जो राइट हैंडर बैट्समैन उनको अंदर आता है और वो मुश्किल एक बॉल है और आपके पास पेस भी हो, उसका एक्शन थोड़ा स्लिंगी भी है। जी बिल्कुल, और इन कंडीशंस में आई गेस उसने बहुत हैंडी होना था। मे बी दे ब्रिंग हिम इन द नेक्स्ट गेम। निकोलस पोरन ने बड़ी अच्छी बात बोली है अभी एक इंटरव्यू में जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। समझ आ गई जी।
मैंने 10 साल नहीं है मैं सीरी लाया सीधा मैंने एक्चुअली प्रिंट में पढ़ा है तो इसलिए बोल रहा हूँ, उसको समझ में आ गई थी. He said that if we stick together, gel together, then we should be fine throughout the tournament. It's a dangerous side, no doubt. No question about it. If they wake up on the right side of the bed, on that day they can beat any team in the world. उनकी जेलिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकी टीमों से. बाकी टीमें कहती हैं जी बी डिसिप्लिन, do your basics right, do this, do that. इनका जरा gelling different होती है. They should be allowed to go out in the evenings. They should just relax and they play like the Caribbeans the way they play. हमारी तरह basically. उनकी gelling होती है, वो जैसे gelling अपने बड़े स्पीकर लेके आते हैं. और उनकी अगर आप बस में बैठ जाएं तो आपको 10 different types के ना आपके कानों में वो म्यूजिक जा रहे होते हैं. और मजे की बात यह है कि हर बंदा था जब ये कोच था, मैं उनका नाम बड़े रिस्पेक्टेड बंदे हैं. उन्होंने सब तो बार निकर नहीं पानी, कैंची चप्पल नहीं पानी, म्यूजिक नहीं सुनना. Acha, we want to talk about these things, but we're really short on time, and my producer is in my ear, so I'm sorry I have to cut you guys short. दूसरा मैच जो है वो आज जिम्बाब्वे बामुकाबला आयरलैंड है, and that is also going to be an interesting game because this match, again at Hobart, that's the next game. Misbah, quickly, Zimbabwe, Ireland, दोनों की दोनों मेरे ख्याल में पार टीम्स हैं इस वक्त. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन होगा उनका और दोनों कोशिश करेंगे कि वो ये मैच जीते. Okay, well, you know what? It is time for Wasim Akram's favorite segment, Match Predictions. Right, जनाब, expert predictions brought to you by Olivia. और जल्दी से दोस्तों हमारे पास टाइम कम है. शोएब आपसे शुरू करते हैं. पहले मैच की क्या प्रेडिक्शन है और दूसरे मैच की क्या प्रेडिक्शन है? वेस्ट इंडीज मुझे लगता है जीतेगा, लेकिन अगर फिर मीडियम पेसर के इधर उधर गेंद ला गए नहीं, वेस्ट इंडीज आई वुड गो विद वेस्ट इंडीज. सेकंड मैच जिम्बाब्वे. ऑलराइट, मिसबा फॉर यू. वेस्ट इंडीज और सेकंड मैच बिकॉज ऑफ द कंडीशंस आई थिंक आयरलैंड. ओके, वकार फॉर यू. Yes, with Misbah. Same as Misbah. And भाई हमने कराची में रह के एक ही बात सीखी है, जिधर की हवा है उधर को निकल लो. वेस्ट इंडीज पहला मैच और दूसरा मैच आयरलैंड. ओके, जिम्बाब्वे बोलो, एक भाई ने अकेला जिम्बाब्वे. And I know you're also with them, right? Zimbabwe is a very good team. With nobody, I am not neutral man. I am neutral. Zimbabwe is a very good team, लेकिन अगर नॉर्मल पिच होती हो बाट की, थोड़ा सा पिच है. These were the expert predictions. Thank you for watching the expert predictions. All right, जी, expert predictions आप लोगों ने सुन ली. We are going to cut across to Hobart shortly for the match. जो अगर आपने आखिरी बातें करनी है तो जरा कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसको लाइव मैच की तरफ से. No, I'm good. कोई सब ठीक है, सब सही है. हौसला रखिएगा क्योंकि शाम को फिर मुलाकात होगी. Go nuts. रूम में बिल्कुल. पराठे तैयार है हमारे, नाश्ता हमारा वेट कर रहे हैं दोस्तों, और होबार्ट में गेम शुरू होने लगी है. लेकर चलते हैं आप लोगों को लाइव टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द ICC Men's T20 World Cup Group B. First game coming up, West Indies versus Scotland.